इलाहाबाद में महाकुंभ के दरमियान जो हादसा हुआ है और लगभग 40 लोगों की जान गई है, उस पर हम हमारी संवेदना प्रकट करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। जो इस हादसे में मारे गए उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और जो जख्मी है उनकी जल्दी स्वास्थ्य कामना की प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं देख के हैरान रह गया कि यूपी सरकार तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और कहती है कि ये राज्य सरकार का दोष नहीं है। पवन बंसल जी दिल्ली में पत्रकारों को कहते हैं कि ये रेलवे का दोष नहीं है, तो फिर किसका दोष है? हम मानते हैं कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों बराबर के दोषी हैं, क्योंकि हादसा रेलवे स्टेशन पर हुआ। अब पहले खबर आ गई कि ओवरब्रिज टूटा, नहीं टूटा, ये कोई मुद्दा थोड़ा ही ना है। मुद्दा है लोग मरे, स्टेशन पर आपाधापी हुई और उसमें पुलिस का भी रोल है और उसमें रेलवे प्रशासन की अकार्यक्षमता है। तो जो भी हुआ है उस हादसे पर तू मैं करती है, लेकिन ये दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार, दोनों भी इसके लिए बराबरी के जिम्मेवार है। और हम इसको पार्टी से भी आगे जाकर देखना चाहते हैं कि कितने दिन आजादी के बाद 65 साल हुए, कितने दिन हर यात्रा में हादसे होंगे, होते रहेंगे। क्या हम ऐसा इंतजाम और व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते कि जिसमें हादसा मुक्त यात्रा होगी? सारे दुनिया में अनेक तरह के मेले लगते हैं, लेकिन एक व्यवस्था जो करनी चाहिए पूरी एक मजबूती से। हमारे यहां भी कुछ जगह है कि जहां कहीं हादसा नहीं होता, लेकिन अनेक स्थान है, जैसे आपको याद होगा राजस्थान में एक जगह हुआ, महाराष्ट्र में पांडरदेव में हुआ, अभी अभी फिलहाल केरल में शबरीमला में हुआ। ऐसी दुर्घटनाएं हर यात्रा में होती रहती है। ये बहुत ही देश के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसको पहले सुधारने के लिए मांग करते हैं। हम उनको तुरंत मुआवजा देने की और एक न्यायिक जांच करने की भी मांग करते हैं। What has happened in Allahabad yesterday on the occasion of Mauni Amavas in Mahakumbh is really tragic, shocking and avoidable. The tragedy in which nearly 40 people have died and scores of others are injured. We pay our homage to those who are died and wish early recovery for those who are injured. But unfortunately, the state government is prompt enough to immediately declare that they are not responsible. You should be prompt enough to save the people, to make proper arrangements. And Mr. Pawan Bansal, the railway minister, is prompt enough to tell that this is not the railway's fault. Then whose fault it is? Both the state and the central government are equally responsible for this tragedy. So please stop this tu मैं and take the responsibility, make judicial inquiry, help the victims and the families of the victims. But more than that, when we will start thinking of having accident-free pilgrimage? Because every other year we listen to Shabrimalas and
in Rajasthan, in Maharashtra, in everywhere, in many states, in Naina Devi, every time this happens, Amarnath, why can't we make a comprehensive arrangement, a disaster management in a way, preventive disaster management, where disasters won't happen? So this is what really BJP wants to say about this Allahabad. एक बहुत गंभीर मुद्दा सामने आया है कि विकास की गति थम सी गई है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। 5% या उसके आसपास विकास की गति रहे, यह बहुत ज्यादा शोभा नहीं देता है। और इसका कारण अंदर है, व्यवस्था में है। प्रधानमंत्री जी को जब यह बताया गया था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट थम से गए हैं, तब उन्होंने आनंद फानंद में तुरंत नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया। लेकिन वो कोई कारगर उपकरण सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि उससे फैसले नहीं हो रहे। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, पर्यावरण मंत्रालय ने उसको एक तरह से नकार दिया है, उसको एक तरह से एकदम अनुपयुक्त साधन करार दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी अहमियत रखी है। मुझे तो लगता है कभी कभी कि जिस तरह का डिले हो रहा है, जिस तरह की करप्शन की खबरें भी आती है, तो पर्यावरण मंत्रालय का एक नया एनवायरमेंटल लाइसेंस राज शुरू हुआ है क्या, यह भी एक देखने जैसी बात है। क्योंकि इससे पूरे देश की तरक्की कम होती है, नुकसान होता है, रोजगार नहीं निर्माण होते। और पहले ही एक विश्व का विकसित दुनिया का एक प्रेशर भारत पे है कि पर्यावरण के इतने सारे नियम कानून वो अपने पर बोझ डालना चाहते हैं कि अपना निर्यात जो है, जो आज सस्ता है इसलिए हो रहा है, वो महंगा कैसे हो, ये उनकी एक रणनीति होती है। लेकिन हमारे अंदरूनी मतभेद, ये 10 जनपद और पीएम और ये जो सारे मतभेद है, उसके कारण चलते आज ये एनवायरमेंट का एक नया लाइसेंस राज आया है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। सही पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब विकास की बाधा नहीं। और मैं तो अभी अंडमान जाके आया रक्षा संबंधी मामले में, समिति में, तो सबने देखा वहां कितने प्रोजेक्ट रक्षा के स्ट्रेटेजिक, वो भी सीआरजेड और एनवायरमेंट क्लियरेंस के कारण सब रिजेक्टेड है या लंबित है। तो क्या मतलब है? So this is one serious issue on which we want to react, that today when the country is facing a complete slowdown of its economy, where we are growing at nearly 5% per annum, over our expectation of 7% per year, this is a serious issue in which the government must act proactively and sanction projects so that they are unleashed, the jobs are created, economic activity is more and things go smoothly. But instead what is happening is, because of their internal contradictions within the UPA, the PMO goes ahead with formation of National Investment Board and the Environment Ministry becomes a roadblock. It doesn't give permissions in time and it doesn't grants. We have been on a recent tour in Defense Committee and we have seen for ourselves, we are writing to the government. In strategic matter of defense also, if you are faced with all kinds of roadblocks and you have to skip the projects because of CRZ and environmental clearance, it seems that there is a new environment license Raj. We don't want that license Raj to come again. So there has to be a coherent policy, and particularly in face of global pressure, which wants to put pressure on India so that the Indian exports become uncompetitive or more costly. So this is the whole game, and where the government should be working in unison, instead it is working in different direction. आज सर एक मुख्य मुद्दा है, तीसरा और अंतिम, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो साक्षात्कार कल दिया है, वो पढ़ने के बाद कोई भी देशभक्त नागरिक हिल गया होगा
क्योंकि ये साक्षात्कार एक तरह से अफजल गुरु को सहानुभूति दर्शाता है और हम इसलिए इसकी भर्त्सना करते हैं। आज उनका पूरा साक्षात्कार कहो, उसमें 3-4 मुद्दों पर आज मैं बात रखूंगा। उन्होंने कहा कि अफजल was young man of 43, he should not have been hanged. जिनको मारा आतंकियों ने पार्लियामेंट में, जो 9 लोग शहीद हुए उसमें से 6 लोग अफजल से भी जवान थे, वो मरे हैं, उन्होंने अपने प्राण की कीमत दी है, शहादत दी है। उनके लिए उमर अब्दुल्ला का दिल नहीं चीख रहा है और ये जवान है ये कह के उसको आप सहानुभूति जता रहे हो, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने न्यायालय के निर्णय को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, विच इज ऑब्जेक्शनेबल। उन्होंने कहा है कि परिस्थिति जन्य सबूत, आई हैव नेवर हर्ड वर्ड्स बीइंग यूज्ड लाइक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड टू satisfy the collective conscience of the people. He is selectively quoting out of context from the judgment. He forgets in the same judgment, 271 pages judgment, the Supreme Court has clearly stated that there is no shred of doubt as far as the participation in the conspiracy of Mr. Afzal Guru. And further, they have narrated in the judgment that though he was not part of the terrorists who actually attacked the parliament, but still he ensured that this attack happens. He did everything. तो उन्होंने पार्लियामेंट पर, संसद पर हमला करने के लिए सब कुछ किया और उनके सहभागिता के लिए कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये उच्चतम न्यायालय का बयान है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उमर अब्दुल्ला वो भूल जा रहे और जो 2 वाक्य आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे, जो अरुंधति रॉय ने लिखे थे, वही वाक्यों को लेकर वो आगे बढ़ रहे। सबसे आपत्तिजनक बात उन्होंने कश्मीर के युवकों के बारे में लिखा है कि कश्मीरी यूथ, द यंगर जनरेशन, द नेक्स्ट जनरेशन may not be identifying with Maqbul but is will identify with Afzal Guru. Why? Absolutely wrong. कश्मीरी युवाओं का यह अपमान है। कश्मीर के युवक अपने को अफजल गुरु के साथ नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। वो अगर अपने को आइडेंटिफाई करते हैं तो क्रिकेटर शामी अहमद से आइडेंटिफाई करते, या आईएएस में जो कश्मीरी लड़का टॉप आया वो शाह फजल से वो आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ऐसा कहना कि ये सारे जैसे अलगाववादी हो गए, मुझे तो लगा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भेष बदलकर अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं। तो ये गंभीर है और इसलिए हम इसकी भर्त्सना करते हैं। वी आर कंडेमिंग उमर अब्दुल्ला फॉर द इंटरव्यू विच ही हैज गिवन actually speaking the separatist language. He is ending up by actually sympathizing with Afzal Guru, the dreaded terrorist. He says that Afzal was young, of 43 years. But those who were killed in the attack on Parliament, 6 out of 9 were younger than Afzal. The CM doesn't bother about him. Bother about them, doesn't worry about them, but describes Afzal as young and needs, that means he needs more sympathetic treatment. He also selectively takes few sentences of judgment of the Supreme Court, saying that this type of judgment I have never seen. These are the 2 sentences picked up from Arundhati Roy's article, because she made a case out of selectively picking up the 2 sentences of that
to satisfy the collective conscience of the society, we are sentencing him. And second was about the circumstantial evidences. But actually forgets that in the 271 pages of judgment, the Supreme Court has come very heavily saying and concluded that there is no shred of doubt about the participation of Afzal Guru, and also they have said that though he was not the attacker himself, he ensured that attack happens. He did everything. And so this is absolutely worrisome, and more than that, he has insulted the Kashmiri youth by saying that Kashmiri youth will identify itself with Afzal Guru. No! Mr. CM Omar Abdullah, you are wrong. The youth of Kashmir doesn't identify itself with Afzal Guru. They identify themselves with Shami Ahmad cricketer and Shah Fazal, the IS topper from Kashmir. So that is the aspirational youth of Kashmir, which we see and which we interact, and not the Kashmiri youth you want to project. This is absolutely a separatist language you have used. We condemn this approach. आज दीनदयाल जी उपाध्याय की 45वीं पुण्यतिथि पर पार्टी के मुख्यालय में और देश के सैकड़ों जगह सभी जिलों के मुख्यालय में माल्यार्पण किया गया। उनकी प्रतिमा का 45वीं पुण्यतिथि थी और यहाँ आडवाणी जी, गडकरी जी, आनंद कुमार जी और बाकी सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। और ये देश भर में हम एक समर्पण दिवस के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें अपनी धनराशि हर कार्यकर्ता जितना भी संभव है उतना पार्टी को देता है। तो ये प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। कुछ दिन इधर अलग अलग कार्यक्रमों में ये समर्पण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। आपके कोई सवाल होंगे? Sir, he has said that by this Afzal Guru's hanging, this will not only give a huge boost to the anti-Indian protest in the valley, sir, he has completely tried to pull all of these extremist groups together on this very issue. How does BJP react? Yasin Malik saying something or separatist leader saying something is a known position of separatist which the whole country rejects. But it is unbecoming of a chief minister saying the same language. Mr. Venkat. Prakash, instead of making a general allegation against the Environment Ministry, do you have any concrete evidence that the Minister of Environment Ministry, Jayanti Natarajan, is responsible, or the officials of the ministry is responsible for the corruption or scams what you are trying to communicate? No. I am not. No. I am not saying about corruption or scam. But what do you mean by the new? I am saying about the internal feud within the ministry, which is resulting in further delay of projects, which worries us. And more than that, what I am saying is that when there is a global pressure which wants to impose more and more conditions on us, we should be actually sanctioning more and more projects before that deadline. And that is why not granting even after the formation of National Investment Board is what worries us. So there must be some reason for not giving a permission. But at the same time, do you make any allegation the projects are not got permission because of the some expectation from the ministry or ministry officials? No, this is not. I am not going into the intricacies of which file moved where and how much days it stayed at one table or how it moved from one table to another table. That's not the issue. The macro issue is our development has become sluggish, and in that scenario, you must look to your mechanism which you are creating for faster clearance of project. You say that you have created a super body of National Investment Board which has been actually rejected by the Environment Ministry, and that is why the old thing continues. Nothing has happened, nothing has changed. That is my issue, not a personal issue at this moment.
रविंद्र जी आपका सवाल। प्रकाश जी, आपने कसाब और अफजल गुरु को फांसी का स्वागत किया है। एक भुल्लर है बेअंत सिंह के हत्यारे, उन्हें भी सजा मिली हुई है और राजीव गांधी के हत्यारों को भी मिली। एक तरफ डीएम के अपोज कर रहा है, एक तरफ अकाली दल कर रहा है। बीजेपी का क्या रुख है इन दोनों मामले में? हमारा रुख बिल्कुल साफ है। आतंक आतंक है और आतंक को वही ट्रीटमेंट देना चाहिए जो भी कोर्ट की सजा है उसका उस पर तुरंत अमल होना चाहिए। आपको मालूम है पंजाब की केस अभी एक लास्ट इसमें कोर्ट में है जो जल्दी निकालना भी चाहिए, लेकिन वहां भी आपको प्रियंका वाड्रा जी को भी पूछना पड़ेगा कि उन्होंने जाकर वो मिली, माफी की किया, वो सब हमने पढ़ा। मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की भूमिका साफ है। टेरर इज टेरर। टेररिज्म हैज टू बी डेल्ट without any discrimination of caste, creed, religion, region, and must be dealt with firmly. Otherwise, we can't tackle this menace of terrorism. Mr. Murli. Prakash ji, you made a very serious charge against Jammu and Kashmir Chief Minister that he has become he is speaking the language of separatists. Do you think J&K is a fit case for Article 356, and do you think the government should be dismissed? No, where is the issue of that dismissing the government? The issue is that he will, I hope that he will reconsider. You mean to say that if he will reconsider his own position. So that's what we expect in a saner society. Mr. Sumit Patel. Sir, you have one of the criticisms which the government is facing on this execution of the death warrant is that at least the government should have informed the family in advance and they should have been allowed to meet the person who was being executed. Do you think that the government should have done the least that they could have done? See, I think I have given more serious factors a consideration, like identification of youth with Afzal Guru in Kashmir Valley, or the reading of the Supreme Court judgment the way somebody wants, or charging the whole Kashmir Valley people and challenging their patriotism. That is unfair. That is what my stress is, and that's what I am not going into those details which are purely jail manual things. Purely jail manual things, and even Omar Abdullah has not said that this is not a part of jail manual. Knows it. No, but this is a completely different question. No, this is the question of jail manual. Jail manual gives whose body it is and how it can be. It has to be disposed of and how to be communicated. जावड़ेकर, जब अफजल को फांसी नहीं हुई थी तब आप 2009 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया था। अब फांसी हो गई और समय को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है आप पूरा राजनीति कर रहे हैं उस पर। हमारे लिए आतंकवाद कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं है। हमें आतंकवाद इस देश में नहीं चाहिए। आतंकवाद का पराजय हम देखना चाहते हैं। जैसे अमेरिका ने कहा कि हम हमारे भूमि पर आतंकवादी नहीं होने देंगे, वो स्थिति हम चाहते हैं और उसके लिए जो भी करेगा उसको क्रेडिट जाएगा। उसके लिए हमें कोई वो चिंता नहीं है। हम इसको एक चुनाव या छोटे राजनीतिक नजरिए से नहीं देख रहे, हम इसको देश हित के नजरिए से देख रहे। प्रकाश जी, 24 परगना का एक मामला है जहां रेप टीजिंग का विरोध करने वाले एक 13 साल के लड़के को गोली मार दी गई है, क्या कहेंगे? मैं जानकारी लेकर बोलूंगा, विदाउट जानकारी। Sir, one of the prime accused in Suryadeli gang rape case today came to media and he was saying that Mr. PJ Kurian, he was there at the time of the gang rape incident and he was also part of the gang rape. How you are reacting? BJP still sticking on the old stand that he need not to be resigned. No, that is why I said that today we also heard this news. We are taking information, more information from our KL unit. We'll give our comprehensive reaction tomorrow because today there are these 3 topics, very important topics, so we are giving it tomorrow. Sir, there was the information because not this. 1 minute. The information which has come today on TV screen, वो है तो वो. Sir, but Venkat, please. After confirmation, we'll react. Yes. Sir, but because it's a serious issue. Sir, but it seems that you should not seem. No, let me ask you a question, sir. It seems that your state unit and the central leadership are not on the same page with regard to this thing because there was a strong act. Your state unit
wants he to go, and you are yet to come out on a strong statement on that. What? Nobody has made statement about this. But this is, I tell you, this is a very serious issue which we will comment comprehensively. Our state unit is already in action. And as you know, in Kerala politics, all the CPI, CPM, Congress, their internal feuds, everybody is on street. So, At least you both on the same page. Came out in BOK today and said pro-Afzal two statements and said that after Afzal hanging, there will be numerous protests within the Indian Kashmir as well. That is how they counter, and within hours, the extremist leaders such as Yasin Malik and all of this, and they are sitting on a 24-hour protest. It is a direct connection between Hafiz Saeed and such. absolutely, the separatist leader in Kashmir have a live wire connection with the Hafiz Saeed and terrorists sitting across. So they are in league. The issue is how government tackles it. Let us not blame Kashmiri people. I don't subscribe to the view that Kashmiri people are on streets and they are very upset. No way. Their patriotism should not be challenged. प्रकाश जी एक सवाल मेरा है, ये अफजल गुल को जो फांसी पे लटकाया गया है वो शिंदे जी के, वो है होम मिनिस्टर, तो अब आप उनकी तारीफ करेंगे या उनका बहिष्कार ही जारी रहेगा? लोगों के दबाव में सरकार को ये काम करना पड़ा और इसलिए जो न्याय के अमल में 8 साल की देरी हुई उसको हमने इंगित किया, लेकिन उसको हम इशू नहीं बना रहे. आखिर एक देयर इज अ national sense of relief, a sense of relief nationally. So that is what we have recorded. Not was them back to Puri. The state unit Korean tomorrow. No. The state unit of BJP demand for resignation of PRC. Tomorrow. You can't escape South India's. No, what? I mean, South India is in our heart. I myself from South India. Thank you.